Good morning, students. Welcome back to our online sessions of class 10 science. Today we're discussing about a new chapter of chemistry in your textbook syllabus, chapter number 2, acids, base and salt. Now, in the previous chapter of chapter number 1, we're discussing of chemical reactions, in which different type of chemical reactions which are associated to each other, which forms a new type of product, in which combination reaction, decomposition reactions, as well as the discussion displacement, double displacement, oxidation, reduction, redox reactions, what is called rancidity and what is called corrosion. That are the topics which is discussing in the chapter number 1. So before starting this chapter, I hope you all are fine, your family is having a maintain the good health in these pandemic situations. So I request you to all, please don't go unnecessary outside your homes. So stay home, stay safe. Now let me start this chapter that is called acid, base and salt. So before starting, we are discussing acid, base and salt in the previous class also. When in standard 9, you were studied about the chemical bonding or the chemical reactions, in which discussing about the slightly what is called acid, what is called base, how the acid that can be implemented, how the bases that can be implemented. Okay. So generally, I just revised on the topics and we'll move ahead on these formations. So first of all, if we're discussing about the acids, generally acids are in a taste of sours, थोड़े से खट्टे टेस्ट में होते हैं. Acids are generally in taste of sour, which having like taste खट्टापन जिसमें फील होता है ना, जो जैसे कर्ड है या लेमन्स है या ऑरेंज है ना, या फिर आप देखो बटर मिल्क है, टोमेटोज है, लेमन्स है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो हैं which in taste of sours, which generally having in a acidic nature. So these are the general characteristics of acid and base. Acids are having in a taste of sours. उसके अलावा आप देखेंगे, so it should be generally converted the litmus paper test to blue litmus paper into the red litmus paper. It is also have been practically we have to examine into the laboratories. If we dissolve the blue litmus paper into that aqueous solutions and it should be converted into the red, it means it have a acidic nature. So that is the basic thing to identify the acid. If we add the blue litmus paper into the aqueous solution and the blue litmus paper is converted into the red, it is slightly known as a acidic solution. Now the acidic solution always be, when you dissolve into the water, it generally release the H plus ion or H3O plus ion. So when H plus ion that can be released from any aqueous solution when it dissolve into the water, it is also be said that it is in a acidic nature. Also, the acidic natures having always be pH value is lower than 7. If pH value is less than 7, is always be having a acidic solution. So these are the general characteristics of acid. कि acid क्या होते हैं, टेस्ट में थोड़े से खट्टे होते हैं, sour of taste. It generally convert the blue litmus paper into the red litmus paper. It always be generally release the H plus ions when it should dissolve into the water, and it having a less than 7 pH values. Now similarly, what about the base? Now bases are that type of substances who are slightly bitter into the taste. वो थोड़े से खट्टे होते हैं टेस्ट, आप सॉरी कड़वे होते हैं टेस्ट में, slightly bitter into the taste. A bases solution are generally convert the red litmus into the blue litmus paper. When you dissolve the red litmus paper into that aqueous solution, you don't know it is acid or base, and it should convert into the blue. It means the solution is a basic solution. And basic solution always be release the OH minus ion. कि अगर उसको आप dissolve करेंगे like NaOH को अगर आप implement करेंगे तो उसमें से OH minus ion release होगा, तो OH minus ion release हो रहा है, it is called base. और HCl में से H plus ion release हो रहा है, it means acid. तो अगर OH माइनस आयन रिलीज होता है, इट इज़ कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस. और बेसिक सब्सटेंस के पीएच वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन 7 से हमेशा ज़्यादा होती है, उस सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंस कहते हैं. तो दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मतलब क्या? इंडिकेटर्स आर जनरली दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच चेंज द कलर और विच ऑल्सो चेंज द टेस्ट. इट इज़ कॉल्ड ऑडर, स्मेल. So, indicator are those substances which can change the color in the presence of acid and base. When you implement this type of the indicators in the presence of acid and base, it slightly change the color of that solution. Also,
it can also be changed the order, it means smell of that particular solution in the presence of acid and base. So that is called indicators. Now there are two type of indicators. एक होता है synthetic indicators, one is called natural indicators. Synthetic indicators that we have already used in our laboratories, हम lab के अंदर use करते हैं, जिसमें phenolphthalein और methyl orange. Phenolphthalein and methyl orange, these are the two synthetic indicators which we have to use in our laboratories in the base practical of acid and base of titration. Now natural indicators like extraction of red cabbage leaves, extractions of the particular form of vanillas, onions, starch, these are the generally formations which having the known as a natural indicators. This type of indicators are generally responsible for changing the color of the substances in the presence of acid and base. Also it can be changed the order, it means smell of the particular substances in the presence of acid and base. So this is the general characteristics of acid and base and indicators. Now, so that we are discussing what is called indicator, what is called acid and base. So now if you want to produce the acid and base into the laboratory, what you have to do? If you want to produce the acid and base into the laboratory, then what we have to do? If I have to produce the acid, then what we have to do? अगर हमें base बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? Acid always be formed with the reaction of non-metallic oxide to the water. याद रखना, that should be asked in question. Acid always be formed when we react non-metallic oxide to the water, then we'll get the acid. Similarly, if the metallic oxide is there और metallic oxide का अगर formation water के साथ करते हैं, then we get the base. Simple things. Metal oxide plus water that gives the base, and non-metal oxide plus water that gives the acid. Like for example, how the acid and base that can be formed. For example, carbon or maybe a sulfur. Sulfur is a non-metallic substance. Now when the sulfur react with the oxygen, it may be convert SO2 or SO3 whatever, और उसका रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करेंगे तो H2SO4 या जो भी सब्सटेंसेस है वो बनाता है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करोगे तो कार्बोनिक एसिड वो बनाता है. तो ऑलवेज बी एसिड दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद द वाटर, and base that can be formed always be the metallic oxide formed with the water. For example, sodium is what? Metal, Na. Sodium is a metal. When that react with the oxide, it becomes sodium oxide, Na2O. That will react with the water, always we give NaOH, sodium hydroxide. It is a base. Also potassium oxide that react with the water, potassium hydroxide, KOH, as well as calcium that react with the water, calcium hydroxide. So always be any oxide of metal react with the water, form the base, and any non-metallic oxide react with the water that formed acid. So that is the generally we can produce acid and base from the laboratory. Now it is generally formed like HCl. If we see that solutions, if we practice into the laboratory, I have the different type of solution like HCl is there, H2SO4 is there, NaOH is there, CaOH twice is there, KOH is there. So which kind of color that can be changed in the presence of this type of indicators? Now first we take HCl. HCl generally, if you see the red litmus paper into the HCl, अगर आपके पास HCl है और HCl के अंदर अगर आप red litmus paper डालते हैं, it cannot be changed the color, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इट इनटू ब्लू इनटू रेड, जो मैंने लिखा है. एसिड जनरली कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड लिटमस पेपर. तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास है and if we add the red litmus paper into the acidic solution which does not give any kind of changes, but if we add the blue litmus paper into the HCl, it generally converted into the red, वो red के अंदर convert हो जाएगा. But अगर आप उसमें phenolphthalein के drops डालते हैं, if you have an acidic solution and you add the synthetic indicators like phenolphthalein, तो phenolphthalein को ऊपर add करोगे ना तो there is no any change of color that will be taken in the practicals. But if you add methyl orange, that will slightly convert it into the red color. methyl orange को डालोगे तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर के अंदर कन्वर्टेड हो जाएगा. सो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन अगर हमारे पास है लैब के अंदर और अगर आप उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा.
और एसिड के अंदर अगर आप फिनोफ्थैलिन को डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है। ओके, जनरली प्रॉपर्टीज सिमिलरली बेस का है। अगर मेरे पास NaOH है, KOH है, CaOH ट्वाइस, ऐसा बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप रेड लिटमस पेपर को डालोगे, इफ यू ऐड रेड लिटमस पेपर इनटू द बेसिक सॉल्यूशन, तो बेस क्या करता है, रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जैसे रेड लिटमस पेपर आप बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, इट स्लाइटली कन्वर्टेड इनटू द ब्लू कलर, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही उस पर अगर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर पे किसी भी तरह का बेसिक सॉल्यूशन काम नहीं करता है। अभी बात करते हैं इंडिकेटर्स का। अगर आप उसके अंदर फिनोफ्थैलिन ऐड करते हैं बेस के अंदर, बेस के अंदर अगर आप फिनोफ्थैलिन को ऐड करते हैं तो वो कौन से कलर में बनता है, पिंक कलर में हो जाता है। इफ वी ऐड फिनोफ्थैलिन इनटू दैट टाइप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, इट स्लाइटली कन्वर्टेड इनटू द पिंक कलर। लेकिन अगर आप उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो वो येलो कलर में हो जाएगा। तो दैट इज जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉर्मेशन। तो ऐसे हम एसिड बेस को जनरली लैब के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हम एसिड बना सकते हैं, कैसे बेस बना सकते हैं, दैट आई विल गिव द क्लियर आइडेंटिफिकेशन। नाउ अभी एक टॉपिक और हम डिस्कशन करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं उसको, ऑल्फैक्टरी, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर का ही पार्ट होता है। Olfactory indicators are generally responsible for the changes of smell, order, smell changes के लिए वो responsible होता है। So, acid does not remove the order of an olfactory indicators। तो जो smell जो change होता है, olfactory indicators दो तरीके के होते हैं, मतलब, और मैंने इंडिकेटर का मेन काम आपको समझाया था कि इंडिकेटर दैट कैन बी जनरली चेंज द कलर ऑफ द सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, और indicators may be change the order, it means smell, of the substance in the presence of acid and base, right? So what is meaning of olfactory indicators? So we generally know that ke acid does not responsible for the removing of this type of smell। अगर एसिडिक सब्सटेंसेज है और हमें इस तरह के स्मेल को रिमूव करना है, तो एसिड आर द दो सब्सटेंसेज हु डज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द ऑर्डर ऑफ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, while base are that kind of substances which are responsible to remove these olfactory indicators यानी smell। और तो एसिडिक के अंदर ये olfactory indicators का कोई भी changes नहीं होता है, but when you add the base it generally changes the olfactory indicators। For example, while HCl is sprayed on the cloth strip, HCl को अगर आप cloth strip पे स्ट्रैप करते हैं with the clove oil, so it cannot be remove the effect of that smell। लेकिन अगर आप वही बेसिक सॉल्यूशन के साथ आप उसको ऐड करते हैं तो इट जनरली रिमूव दैट ऑर्डर ऑफ स्मेल। तो इसीलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दैट जनरली वर्क्स विद द बेस, इट इजीली रिमूव दिस सॉल्यूशन ऑफ स्मेल, बट एसिड डज नॉट रिमूव दिस फॉर्मेशन। तो व्हेन we add the basic solution like NaOH with the cloth strip with the clove oil, the same of clove oil cannot be detected। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो बेसिक सब्सटेंसेस है, बेसिक सब्सटेंसेस के साथ ऐसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल को ऐड करते हैं और कपड़े पे डालते हैं तो यू कैन नॉट बी डिटेक्ट द स्मेल, बट एसिड के साथ डालेंगे तो यू कैन इजीली डिटेक्ट द स्मेल। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दैट कैन बी रिमूव द स्मेल विद द प्रेजेंस ऑफ बेस, बट इट कैन नॉट बी रिमूव द स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। So these are the generally topics which we have to discussing in the smaller form of acid and base. Now, later we move on to the chemical reactions. Chemical reaction of acid and base. Now, generally each and every characters of an element having a specific property. जैसे हमारे अंदर भी देखो तो we have a specific property. किसी की हाइट बड़ी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी के हैंड्स बड़े होते हैं, किसी के हैंड्स छोटे होते हैं, किसी का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, किसी का ग्रास्पिंग पावर कम होता है, किसी को कुछ और चीज़ का इंटरेस्ट होता है देखने और किसी को कुछ और टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो देयर इज अ बाइफर्केशन दैट वी कैन बी सीन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। तो सिमिलरली द एनी सॉल्यूशंस हैव देयर डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी सॉल्यूशन है, आप किसी का भी सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन किसी का भी प्रिपेयर करते हैं, एनी सॉल्यूशन दैट वी हैव बी प्रिपेयर्ड इट हैव देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे दो तरीके के प्रॉपर्टीज रहते हैं। ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस हैव टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वन इज कॉल्ड फिजिकल, वन इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देन वी डिस्कसिंग ऑन बेस, बट फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट chemical properties of acid. There is 4 and 5 chemical properties which is belongs to the acid, but we are discussing only 2 of them because we have some sufficient time for that.
So chemical properties of acid, first we discussing. Now there is a first reaction that is called as a chemical reaction of acid with react with the metal. Now how do metal that react with the acid? And a simple one question is there. How do, as a part of chemical reactions, metal react with the acid? Okay. So when any metallic substance that react with the acid, always be remember that any metallic substance that react with the acid always be produce the salt plus release the dihydrogen gas. This is the one chemical property of that. Any metallic substance that react with the acid always be produced what? That produce the salt plus dihydrogen gas. Dihydrogen gas that can be produces from that. For example, how can we consider that implemented as a part? Like for example, I'll take one example for that, how metal that react with the acid. I'll take one example, zinc. Zinc is a metal. Zinc is what? It is a metal that react with 2HCl. HCl is what? Acid. Zinc is a metal. HCl is what? Hydrochloric acid. So if you react with that, you get ZnCl2 plus H2. ZnCl2 plus H2. Zinc chloride plus dihydrogen gas. So when any metallic substance that react with the acid, always it produce salt plus water, ZnCl2 plus H2. Similarly, if I produced Mg plus 2HCl, it gives MgCl2 plus H2. So very simple. Any metallic substance that react with acid and base, it always be metallic substance with acid produce salt and dihydrogen gas. So dihydrogen gas is generally forms as a. Now, if we consider that zinc metal that react with the dilute HCl, zinc metal that react with the dilute HCl as a form of HCl, or maybe a dilute H2SO4, whatever, H2SO4 के साथ react करो या HCl के साथ react करो, always be that produce the salt and water, dihydrogen gas. So if you react with Zn plus H2SO4, that gives ZnSO4 plus H2. अगर आप Zn plus 2HCl करेंगे तो ZnCl2 plus H2 ऐसे आपको gases वहाँ पे evolved होते हैं. But hydrogen gas does not evolve when it can be react with the nitric acid, HNO3. If you react with HNO3, there is no any production of hydrogen gas. जैसा अभी मैंने आपको समझा कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन तो रिलीज होना चाहिए, लेकिन अगर मेटलिक सब्सटेंस को नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ करते हैं इसका रिएक्शंस, तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व नहीं होता है. व्हाई इट शुड बी नॉट इवॉल्व? उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. जैसे हम देखते हैं कि HNO3 जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो H2 गैस दैट इवॉल्व्स ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ H2O. H2O का जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तब हमारे को H2 गैस वहाँ पे मिलता है. सो देयरफॉर H2 गैस इज नॉट ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ HNO3. ठीक है, तो ये खास उसका डिफरेंस आपको देखना है. दूसरा केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. दो वहाँ पे रिएक्शंस हैं, या तो मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट ले सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे उसका रिएक्शन होता है. जैसे कार्बोनेट यानी सोडियम का कार्बोनेट Na2O3. सोडियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या होता है? Na2O3. ये जो Na2CO3 है उसका रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करते हैं, HCl इज व्हाट? एसिड. Na2CO3 वाज कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट. तो इफ Na2CO3 प्लस HCl इन अ फॉर्म ऑफ 2HCl फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दैट रिएक्शन हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2. NaCl इज सॉल्ट, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. उसके साथ साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना हो तो हाइड्रोजन उसमें चाहिए, तो NaHCO3 ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो NaHCO3 का रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करेंगे तो भी आपको NaCl प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा. ये जो रिएक्शंस बनता है इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट. तो व्हेन एसिड दैट रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट ऑलवेज बी फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो only for the today's topic we discussing about the acids, base, their chemical physical properties, their general characteristics, what is called indicators, how acid and base are formed, and what is general characteristics of chemical properties of acid, in which two properties we discussing, in which first is what? First we discussing about the acid that react with the metal and acid that react with the metal carbonate or hydrogen carbonate.
When we discuss in the next lecture tomorrow, we will move forward from here, another chemical properties of the acid. Till students, bye, we'll meet you tomorrow. Here.